what's up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn about resize and scroll methods in window project। जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम बात करेंगे resize and scroll methods की। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 से भी फिक्स ना करो, उसको कमेंट कर दूं। ओके ठीक है, सेव। और यहाँ पर एक मैं अगर सेव करूँ, यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ तो देखें स्क्रॉल हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, टॉप टू बॉटम भी और लेफ़्ट टू राइट भी। ठीक है, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये स्क्रॉल जो है वो मूव कर गया ऊपर की तरफ। ठीक है, इस तरीके से। तो ये इस बटन को हमें फिक्स करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या यूज़ कर रहा था, पोजीशन फिक्स। ठीक है, सेव। अगर गाइस मैं अब रिफ़्रेश करूं तो अब देखिए बटन जो है हमारा फिक्स हो गया। ठीक है, तो अब मूवमेंट कितनी हो रही है, 100 बाय 100 के हिसाब से। ठीक है, ओके, ये देखें आपको ये स्क्रॉल नज़र आ रहा होगा।
ठीक है, जूम तो इसको कर नहीं सकते हम, ठीक है, तो स्क्रॉल बाय, ठीक है। तो अगर मैं अब बात करूँ scrollTo की, तो scrollTo में अगर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर 1000, ठीक है, और इसको भी कर देता हूँ 1000 या 500, ठीक है, सेव। तो हम एक कंप्लीट डेस्टिनेशन दे देते हैं कि आपने इस पॉइंट पे आकर रुक जाना है और इससे आगे ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास मूव टू, ओके, सेव। और यहाँ आता हूँ, सेव करता हूँ, ओपन ब्राउज़र कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है। तो अब जैसे ही क्लिक करूँगा तो गाइज़